It's Wednesday night, and we are back with some amazing FIFA action. Welcome, ladies and gentlemen. You are watching the eISL Season 2, brought to you by Notwin Gaming. My name is Fixes. I'm joined along with TTR. As we have already said this earlier, we are approaching the end game. Final few games remaining for all these clubs to make it to the playoffs. And today we've got three set of matches, and they are going to be absolute crackers. Every single one of them, because every single one has a little bit of a storyline going on because of how these teams are positioned. But TT, before we have the day started, how are you doing, mate? I'm good, but I am very excited as well because अभी देखिए जिस तरीके का सिचुएशन बन चुका है ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल के ऊपर मैचेस बहुत ऑलरेडी हो चुके हैं. जस्ट एंडिंग के कुछ मैचेस बाकी हैं और उसके पहले सिनेरियो अभी ऐसा बन चुका है कि टॉप 4 टीम्स तो अपना जगह बना चुके हैं, लेकिन जो बाकी के जो दो जगह है, जो जो स्लॉट्स है, वो कौन बनाएंगे उसके ऊपर अभी बहुत सारा क्वेश्चंस है. क्योंकि चेन्नई एनएफसी की अगर बात किया जाए, या लाइक उनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा डाइसी गया है. पिछले साल जीतने के बाद ये साल इस तरीके से जाएगा वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो इसके लिए मैं दोनों के दोनों स्लॉट्स को ही पकड़ना चाहूंगा कि दोनों ही स्लॉट शायद अभी के लिए अवेलेबल है. कुछ भी हो सकता है. Anything can possibly happen. But before we have the show started, let's take a quick look at the format. And I'm pretty sure all the new viewers would be interested in this. So we are going through with our league stages, which begun from the 28th of February. Now it is going to end on 26th of April. So this is where we've got 11 clubs. Every club has 2 players each. And we've got 55 matches happening in total. In every single match, we've got 3 games. So then onwards, we have the top 6 teams that make it to the playoffs. And last season, we had just 4. This time, we've made sure we've got 2 extra slots. So the top 6 clubs are going to head on and face against each other in the playoffs. And from then onwards, who gets to be the winner also gets that golden ticket for FGS play-ins. And then you must be wondering, what's on the line? It's 33 lakh rupees. And for the first position team, they're going to get 4.5 lakh rupees. And the second position teams gets 2 lakhs and third and fourth share 75,000 respectively. या प्राइस पूल तो बहुत ज्यादा ह्यूज है एंड उसी के साथ साथ अगर आप फाइनल पे जाते हो एंड जीतते हो देन इंडिया को एंड आपके क्लब को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा वर्ल्ड स्टेज पे. सो वो तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा जरूरी है कहने की प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं एक बार वो जो रहने हमारी कंट्री का. तो ये सब कुछ तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा. बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग आज का दिन, जैसे कि फिक्सेस ऑलरेडी कहे थे, ये आज का दिन जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होगा, क्योंकि पहला मैच हो रहा है चेन्नई एनएफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में. और दोनों ही क्लब्स, हो सकता है कि चेन्नई एनएफसी का उतना खास जा नहीं रहा ये सीजन, बट फिर भी वो टॉप 6 पे अपना जगह बना के रखे हैं एंड उनके पास 11 पॉइंट्स है. ऑन द अदर हैंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड तो हम जानते ही है कि क्या क्या मैजिकल चीजें वो करते आए हैं. Yeah, I think when you talk about Chennai FC in whole, right? When they're going up against Northeast United FC, of course, they kind of comfy. They sort of secured those important points. But then again, it's about domination for them because they're the defending champions, and we would expect a performance as such. And today, we're gonna have two brothers meet. It's gonna be Saransh and well, our dear little boy Navin, and both of them are champions, but this time representing different clubs. Along with them would be our lovely Emaad and Tikka also. But a quick look at the leaderboard, folks, and as you can see, we've got FC Goa reigning on top with 24 points. Then we've got Northeast United FC with 15th on the second spot. So for Northeast United FC, you can see this gives them a chance to kind of inch in a little closer to that humongous difference that FC Goa has created already. Considering they've played just 2 less games, so of course they can just try and reduce that margin. But then we've got Chennai FC sitting at 11 points, a little comfy, right? And today a win would sort of give them that confidence, that morale booster that is much needed, especially for Navin, because Tikka, he's been in a stellar form, but Navin has had those bad days, and most of them have been pretty bad, if not good, because it's just that one occasion where Navin managed a victory. Otherwise, it's mostly been a draw, and Coop has been sort of their saving grace, and then Tikka, the ultimate fighter, just comes in and eliminates everybody. But today, TT, it's going to be such an uphill task because you're going up against two of the best players in the league right now. That is Saransh and Emaad. And that is where you sort of start racking your brains.
how do you get through them? आई थिंक इट विल बी टू टफ फॉर चेन्नई एनएफसी, क्योंकि देखिए इसके पहले अगर बात किया जाए, सारांश उतना शायद अलग गेम नहीं खेलते, या फिर हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि वो मैजिक दिखाते हैं। वो अपने जो पूरा बेसिक्स है उसको फॉलो करते हैं, वो पासेस खिलाते हैं और वो गोल स्कोर करते हैं। लाइक उनके लिए बहुत इजी लगता है ये सब कुछ। बट ऑन द अदर हैंड उनकी ही जो टीममेट है इमाद, वो कुछ ऐसा करके जाते हैं, वो इजी नहीं लगता, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है और उसको बयां करना बहुत टफ है कि क्या लगता है, क्योंकि वो बहुत मैजिकल है। वो सब लोग नहीं कर सकते। किधर किधर से लॉ थ्रू पास निकाल रहे हैं, शायद कोई सोचता भी नहीं है कि उधर से बॉल आएगा, एंड बॉल कंट्रोल करते हैं, उसके बाद भी गोल नहीं करते। वो एक सेकंड पास करते हैं, उस टाइम पे भी गोल नहीं करते, फिर एक पास करते हैं, देन जाके गोल करते हैं। तो इतना सोचना बहुत टफ हो जाता है। और चेन्नई एनएफसी के लिए स्पेशली नवीन की अगर बात किया जाए, पिछले साल के विनर थे, बट इस साल थोड़ा सा डाउन जा रहा है उनका फॉर्म। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर में खेल रहे हो, क्योंकि देखिए एक बार चैंपियन आप बन चुके हो, उसको रिटेन करना वो एक अलग प्रेशर होता है। चैंपियन बनने के लिए खेल रहे हो वो तो प्रेशर है, लेकिन आप ऑलरेडी एक चैंपियन हो, आपको फिर से बनना है, तो उस पर और ज्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार वो बेस्ट का किताब जो है वो ले चुके हो eISL सीजन 1 के अंदर। तो उधर से जाके वो प्रेशर क्या उनको प्रॉब्लम दे रहा है या फिर नहीं, वी डोंट नो। बट आई थिंक Yeah. आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज अगर वो जीत ले रहे हैं, जो कि टफ होगा, ऑब्वियसली टफ होगा, लेकिन अगर जीत पाते हैं इधर चेन्नई एनएफसी, देन हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 5th स्लॉट है वो भी शायद काइंड ऑफ जाके एक पक्का हो सकता है। लेकिन अगर वो हार जाते हैं, देन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं चेन्नई एनएफसी के लिए। Yeah, I think you absolutely hit the bullseye, right? It comes down to hunger. Because last time things were different, players were playing on a different console, a different version altogether, and then first game of the evening, folks. And like we said, Navin is going to be on a redemption arc, and he's not going to face against his brother Saransh. He's going to go up against Imad over here, and Imad starting things off, which is quite odd, because I kind of like how they've matched up, because Saransh wants to go against the Titan Slayer, Mr. Tikka himself. As we can see, it's Chennai FC, the Marina Machan, starting from left to right this time in their white jerseys, where we've got Northeast United FC, that is going to be Imad, or from right to left. क्या शुरुआत हो चुका है, और इमाद इस बार स्टार्ट कर रही है, जो कि यूजुअली दिखते नहीं है, वो एकदम आखिर में आते हैं, बट इस बार शुरुआत करने का जो जिम्मा है वो उनको दिया गया है। सारांश पिछले बार टीममेट थे, इसकी वजह से या फिर नहीं, मतलब क्या सारांश के जो टैक्टिक्स है वो जानते हैं कि नहीं नवीन, वो भी एक हो सकता है कारण जिसकी वजह से ये चेंज किया गया हो। बट शुरुआती स्टेज की अगर बात किया जाए, इमाद की तरफ से बहुत ही अच्छा एक बिल्डअप विथ थियो हर्नांडेज लेफ्ट हैंड साइड से, एक अच्छा खासा रन कहीं ना कहीं निकाला गया था टुवर्ड्स रोनाल्डो। Oh God! हो गया स्मूथली। इमाद लगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, जस्ट वो पासिंग किए, नॉर्मल पासिंग, बीच में एक जगह बना और उन्होंने फिनिश कर दिया। व्हाट अ प्ले! Look at that driven pass. Just comes in, takes a turn, takes that shot. This is so difficult sometimes to play up against, right? Because Imad, he made it look so easy. Those quick chain of passes that came along, and suddenly this guy just goes on and scores for fun. And that's the unpredictability that sets Imad apart from the rest, right? He's a kind of a player who's got a lot of stuff going on in his arsenal. Sometimes he can go for those finesse shots right outside of the box. Sometimes for those travelas, and you better not let Imad have possession, because if this guy does have it, you're in for a beating. As now he starts building up his attack yet again with Mbappe passing it on towards R9, but thankfully Navin this time makes the rescue. And there was a certain break, a hiatus in between, where I really felt that maybe Naveen's gonna work on his mistakes and come back soon enough. But when you're going up against such a tough cookie like Imad, you do not know what to do. And this time, Naveen was almost on the verge of making that final pass and then shooting or scoring a goal.
but he was stopped right on his tracks as now he's on a counter attack, and there you can see a low different cross coming in, but nothing happening. या बट अभी बहुत तेजी से एक काउंटर पे जाते हुए नवीन, लेकिन ऑलरेडी डिफेंस पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार मौका मल्टीनी एक बार के लिए तो बचा है। शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पाए तो वैंडे सार बीट हो चुके हैं और इधर से हो भी जाते हैं बीट। बहुत क्लोज एक चांस था नवीन के लिए, लेकिन इस बार नहीं हो पाया वो गोल। देखिए इमाद के खिलाफ डिफेंड करना बहुत टफ है। इमाद को अगर आप रोक पाते हो एक ही गोल के साथ तो मे भी एक इक्वलाइजर आ जाएगा बहुत जल्दी। बेहतरीन एक इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से पूरा ही अटैक इधर टूटता हुआ और फिर से बिल्डअप पे जाएंगे। नवीन थोड़ा टाइम लेंगे ऑब्वियसली इधर मिडफील्ड के ऊपर, और धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। रोनाल्डिनियो टू जार्जिनियो, रोनाल्डो ऑलरेडी अपना पोजीशन ले चुके हैं। अब पीछे एम्बापे, रोनाल्डिनियो, एम्बापे रन निकालते हुए, लेकिन माल्डिनी फाइनली। बहुत शानदार गेम अभी तक चलता हुआ, दोनों ही फुल ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इमाद थोड़ा सा आगे। Yeah, Imad is looking a lot patient, more composed on his defense, right? He's letting Navin come in close. Sometimes he's blocking those shooting lanes. Sometimes making sure his defenders are delayed a little bit. You know, making sure that when they get the ball, but Imad a little hasty with going in for the shot. Again has been stolen, and now with that heel to heel takes a shot. Oh my God! Navin just flabbergasted. Did not expect, did not see this coming. And there you go, it again, meditation, celebration coming in for the calm, cool Emaadrox, the chocolate boy of eISL, strikes again. And there you go, just beating through the defense like that with just one skill move. So you could see, right? I mean, this is where Navin has to be watchful. Cannot let Emad just get away with what he wants. Because Navin, he's been trying, he's been creating chances. I like that, but he's also got to score, and just mere 30 minutes into the game, and he's already down 2-0. That's not good news for the Marina Machans. Yes. पोजीशनिंग देखिए, पोजीशनिंग इधर काफी ज्यादा मेंटेन करते हुए चेन्नई एनएफसी, लेकिन इफेक्टिव पोजीशन वो इधर इमाद के तरफ से गए हो। ये कुछ किया अगर हो जाता गोल तो आई डोंट नो लाइक क्या होता इधर। यस, बट सही टाइम पे एक इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला और बहुत जरूरी था। वर्जिल वैन डाइक बेहतरीन विजन के साथ थियो हर्नांडेस को खिलाया जाएगा बीच में से। बेलिंगम, बेलिंगम बॉल कंट्रोल अभी भी है उनके पास। व्हाट, रोनाल्डिनियो एंड लग रहा है कि पूरा मैग्नेट लगा के है पैर पे, जहां पे जा रहे हैं बॉल उनके पैर पे पहुंच जा रहा है। वो बीच में 3 प्लेयर रहे, 4 प्लेयर रहे, बॉल निकल रहा है सबके बीच से। You know, TT, I can't really process how is he getting away with all those skill moves there. You know, just simple skill moves, and suddenly he's beating the defense. And had Hakimi not made that tackle, it could have been lights out. But another beautiful chance almost created, but thankfully Navin was quick to respond to that. And you can see Imad how much he's fighting for the ball. Navin is barely getting time to breathe, and you cannot afford to give away the ball like that in such a crucial position. Look at that as he scores one more, putting Navin to deep slumber as Imad gets away with the 3rd goal of the evening, and Northeast United FC, they are elated. Look at those movements, look at him go. Every single skill move he does makes it look like an art. And this guy is such a genius. Emaadrox. Remember their name, folks. इमाद मैजिशियन, वो अपना मैजिक कभी भी नहीं रुकते, वो करते रहते हैं। और ये था एक और चांस, पहले मैच के पहले गेम का पहला हाफ। और आप देख सकते हैं फिक्सर्स कि जितना टाइम बढ़ता गया, कोई जल्दबाजी नहीं है,
जस्ट वो होल्ड करके खेले, ज़्यादा आगे नहीं जा रही, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉल पोजीशनिंग भी ठीक ठाक था। एक बार के लिए तो हम लोगों को 59 एंड समथिंग कुछ देखने के लिए मिला था। आई थिंक 38 एंड 62 देखने के लिए मिला था एक जगह पे। राइट। तो उस जगह से रहते हुए भी जब गोल स्कोर करते जा रहे हैं बैक टू बैक फ्लॉलेसली, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो जस्ट पास खिला रहे हैं। पास खिलाते 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 गोल जा रहा है, और 4 शॉट लिए जिनमें से 3 शॉट ऑन टारगेट, और तीनों के तीनों गोल हुए। और ये है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के इमाद। वाओ, व्हाट अ प्लेयर। अभी भी 45 मिनट्स बाकी हैं इस पूरे मैचअप के अंदर, और ये 45 मिनट्स पे मुझे तो लगता है कि और भी गोल्स शायद इधर वेट कर रहे हैं। No, the point is that he's so unpredictable, right? You can't really know what's going on in his mind, because every single goal he scored has been something different, right? It's not the same routine, it's not the same way he's been playing. He's been utilizing his wings a lot, he's been going for those crosses. Heck, he even tried to go for a power shot with Rudolet and had almost green time that. And imagine, had it gone through, that would have been the best goal of eISL. And I can swear by that. Imad is such a player who, if there is a certain prize for the best goal, he's one of the prime contenders to get it. And starting off with the second half, and instantly was in mood for one more. And Navin, I mean, those initial 15-20 minutes was Navin's time, where he kept a lot of possessions, made a lot of passes, but that was just it. Later on, we saw Imad absolutely just taking over, and he's been balling. And no stopping him so far. And for Navin to actually start making a comeback or even show glimmers of it, he has to score a goal. And he has to score a goal in the next 10 minutes. Could be a chance in the making with Mbappe, a quick ball roll. Passes it on towards Zinedine Zidane, wanting to create a little bit of a room. But this time, Imad being a little aggressive over there. And now a lob through as Ronaldinho. Oh, beats Maldini. He's going to take a shot. And this time, however, the accuracy was lacking. But Navin, he has to be watchful, TT. Because this time, of course, the direction was something that saved Navin. But otherwise, I could see that fourth goal coming. देखिए, नवीन को बहुत ज़्यादा इधर और डिफेंस करके फ़ायदा नहीं होगा। अभी ऑफेंस के बदले ऑफेंस करना होगा, नहीं तो इधर से इमाद को रोक पाना पॉसिबल नहीं है। इमाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, और उनके ये कॉन्फिडेंस तोड़ के ही आप जो है उनको रोक सकते हो। और एल्स और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत प्लेयर्स ने ट्राई कर चुके हैं, बट उतना कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है। एकदम राइट हैंड साइड से हकीमी, रोनाल्डिनियो एक बार फिर से बिल्डअप होता हुआ। देखिए, एक बैक पास तो हो सकता है। इमाद बीच से स्टेप ओवर करके निकलते हुए, स्टेप ओवर की वजह से पेस इंक्रीज हुआ, डिफेंडर्स देखते रह गए, और रोनाल्डो राइट पोस्ट पे। व्हाट इमाद। नवीन के लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो ज़रूर ख़राब लग रहा है, क्योंकि नवीन का पूरा सिनेरियो, पूरा सीज़न जो है इतना कुछ खास गया नहीं, और इस बार जिधर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम्स हैं, उनके लिए जो स्कोर लाइन है वो धीरे धीरे कहने के बढ़ता जा रहा है, जो कि उनके खिलाफ भी जा रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस इमाद की तरफ से। Goodness, what do I say? I'm still taken aback. But this time, Navin looks for redemption. Oh, wanted to maybe go for an elastico, get past the final man. But, this is where Imad is excelling. He's just not good on his offense, right? He's got, really nice defense as well. And there are times when he's not just completely passive. He's not like he's just letting the player come in, waits for that final skill move, but he also charges in for tackles sometimes. And when he receives the ball, look at how longer he's keeping the possession. You can barely see Navin trying to fight for the ball. And when he does, it's already too late, as there you go, one more. And Imad is in mood for some thrashing over here as he hits the fifth one, as Northeast United FC are roaring.
As Navin absolutely stunned, stupefied with what's going on with him right now. What does he do? Where does he hide? माद फाइनली इस पूरे सीजन के अंदर बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है जब वो हंसते हुए दिखे, वो एक्सप्रेशंस दिए हैं, और वो अभी ये गोल के बाद थोड़ा सा ही सही बट एक स्माइल की, जिससे पता चल रहा है कि माद के जो लाइन सेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन उसी बीच में डिफ्लेक्ट हुआ, फिर फाइनली रोनाल्डिनियो के पैर से बॉल अंदर गया। बट ये अभी जस्ट कंसोलेशन गोल है, क्योंकि इधर से 4 गोल फिर से मारना, वो भी इमाद को, आई थिंक पॉसिबल तो नहीं। I mean, at this point, well, it's difficult, but it's a step in the right direction. No matter how scrappy it is, he's found one. I think Navin should take this as an opportunity and find another. Wanted to go for a driven pass, but sadly has been saved. Now this is where Imad really excels. These lob through balls, as it directly goes for a shot. All right, just when you're thinking that he's gonna go for a pass, he takes a shot and he scores with Theo Hernandez. We've seen this happen yesterday with Ashraf Hakimi. I think it was CJ that did it, and this time it's gonna be Imad. The fullbacks are also getting utilized. I mean, heck, this guy has also scored with Maldini, and that too a Trivela. So he can do anything and everything. I won't even be surprised someday he gets his keeper up and starts scoring, because Navin, he's just being trolled at this point. 6-1 the scoreline. You would not really expect, but that's how good Imad has been in this game. But finally, एक काउंटर चिप कर सकते थे, बट शायद डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से नहीं किया गया। और उसके बाद भी इधर बेहतरीन, लाइक बहुत सोच समझ के इधर कहने की प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। और इमाद को ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पे भी आ चुके हैं नवीन, तो उनके साथ माइंड गेम्स वो खेल सकते हैं। तो वही चीज़ें देखने के लिए मिला, क्योंकि इधर जिस जगह पे लेके आए थे वेंडे सर को, शायद चिप करने से गोल हो भी सकता था, लेकिन वो करने नहीं दिए, क्योंकि उन्हीं के राइट हैंड साइड पे हम लोगों को वन डाइक देखने के लिए मिल रहा था। तो बहुत शानदार इधर माइंड गेम्स भी खेलते हुए देखने के लिए मिल रहे इमाद। बट उसी के बीच में एक और मौका बनेगा। देखिए फिर से एक बार एडवांस किया गया है, और फिर से एक बार वर्जिल वन डाइक। तो कहने के जो है नवीन को पूरा ओपन बुक की तरह पढ़ के आ चुके हैं शायद। और वो होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स जो कभी भूलते नहीं हैं। Was that not a goal? I mean, if you could check the lines, TT, I felt like that. But I think वो गोल नहीं हुआ, उससे ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं होगा। गोल होता तो भी चेंज नहीं होगा, बट वो गोल मार सकते हैं, ये दिखाना बहुत कुछ कहने की जो है वो बयां कर देता है। क्या शानदार प्लेयर हैं, और हम लोग इसीलिए बात करते हैं इनके बारे में इतना ज़्यादा, क्योंकि ये करते हैं वैसा। इनका फॉर्म अभी गोल्डन लेवल पे चल रहा है, लाइक गोल्डन फॉर्म जिसको कहते हैं, वो अभी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एंड बहुत कम टाइम हुआ है जब वो हारते हुए दिखे इस पूरे एंटायर टूर्नामेंट के अंदर। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस इनके तरफ से निकल के आया है, अलग अलग लेवल पे जाके वो अभी परफॉर्म करते हुए दिखे। और ये हाईलाइट मानो एक फर्स्ट हाफ की तरह पूरा चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि 7 गोल स्कोर किए गए थे इस गेम में। Oh my goodness, TP. I mean, what do we say about this lad? And the big question now arises is this the best of Imad yet? क्या वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं? Because मुझे नहीं लगता. I think we've got to see more out of him. And throughout this entire game, right, there was not even a single moment I felt like, Imad was not in control of this game. Even that one goal, of course, Navin scored, but it was a little scrappy. And, he was creating so many chances in so many different ways. Just look at how he's, controlling that ball in the final third. When, it's so difficult. It's so easier said than done, because when you are on R2, suddenly one extra, touch, and then your attack gets followed.
to sort of control yourself, then do a ball roll, then just give a pass. And there've been so many occasions, and all these little lob throughs that he's given. I mean, how do you stop something like that? What do you do? There are points where he gets his fullbacks in, and just when we're thinking that he might go for a pass, no, he directly takes a shot. And forget about the fact if it's green timed or not, still manages to score every single time. And as Naveen, what can you possibly do? Just sit down and watch as he completely steamrolls over you. And TT, at one point you feel really happy about how Imad has been playing. At the same time, you feel disheartened with what's going on for Naveen, because this is not the Naveen that we are accustomed to see. We have seen some wonderful moments. I mean, Chennaiyin FC's Naveen was one of the most consistent players of previous season's eISL. And this time, this goal, I felt, after hitting that crossbar, I felt maybe it would have crossed the line. But when I saw it again, it just barely just missed by a few centimeters. But Yeah. regardless, I mean, an absolute stunner of a game by Imad. Naveen, sadly, he could not do anything. But let's take a quick look at the scorecard, Fox, as this was an absolute thrashing. 6-1. The scoreline lights out completely for Naveen, where he's got still one more chance to redeem himself, and that is in the co-op. But TT, क्या लगता है हो पाएगा? देखिए, हो पाएगा कि नहीं, ये कहना बहुत टफ है. मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ डिसाइड हो जाएगा इसी कोऑप गेम के ऊपर, क्योंकि कोऑप गेम पे भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा. क्योंकि इमाद के वो कहने के बिल्डअप्स, और सिर्फ बिल्डअप्स नहीं, अभी तो वो फिनिश भी करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से. और सारांश जब आ जाएंगे, सारांश का एक्सपीरियंस के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जितने भी फैंस हैं उनके लिए. सो यहाँ कहने के बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा ये गेम. बट चेन्नई एनएफसी, जैसे कि हम लोग कह ही रहे थे कि प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, लेकिन वो अगर इधर से ड्रॉ भी निकाल के लेके जाए, फिर भी आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि यस, उनके लिए काफ़ी है. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है. काइंड ऑफ हो सकता है एफसी गोवा एक बार भी नहीं आ रहे हो, लेकिन उन्हीं के कैटेगरी पे हम लोग रख सकते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को. और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वो भी वंडर्स कर सकते हैं. और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड एफसी गोवा का गेम बाकी है, जो कि एकदम लास्ट डे पे हम लोग देखने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं उस दिन तो फुल मजा आने वाला है. लेकिन आई थिंक ये कोऑप मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और उसी के बीच में इमाद की अगर बात किया जाए, इमाद अभी इस पूरे इंटायर ईआईएसएल सीजन 2 के अंदर शायद सबसे ज्यादा टॉप गोल स्कोरर बन चुके हैं अभी के लिए. एज ऑफ नाउ शायद वो गोल स्कोरर बन चुके हैं. एंड जिस तरीके से वो गोल स्कोर करते हैं, आई थिंक डाउट भी नहीं है. हम लोग तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये ही प्लेयर है जो कि शायद टॉप गोल स्कोरर बन चुके हैं ईआईएसएल सीजन 2 के अंदर. वो काउंटेड रहेंगे, अभी काउंटिंग चलेगा, क्योंकि इसके बाद तो और 2 मैचेस बाकी हैं. Yeah, and this time he's made it look so easy. There's no second thoughts about that, right? Every single time he had the ball, he was in prime control. And yeah, that is one of those matches, Northeast United FC against FC Goa. I'm pretty sure viewers, you would not want to miss this one. And for that, all you need to do, if you haven't yet subscribed to the channel, then do that, and also click on that bell notification, because that is, of course, going to be a cracker of a game that will take you on a whole different journey into a different realm, because you're just gonna sit back, relax, and enjoy, both these clubs just going after each other. But now, coming back, we've got a co-op game on our hands, and then this particular game, it's gonna be a lot of things, because now Navin's gonna have some help. We've got Mr. Prime Tikka joining us, and this side we've got Saransh helping out our lovely Matt. So it's going to be an interesting one, where we've seen Tikka is one of those players who likes to make those individual plays, right? He's one of those players who does not care about maybe making that extra pass in the final third. He believes that he can just dribble through the defense and score a goal. So let's see, if that's going to be working out for them, because so far, even co-op games of Northeast United FC have been flawless. They've been looking pretty solid, and throughout their campaign, they
they just lost one match, and that's just about Hmm. it. Apart from that, every single game these guys have played, they have won. I think only one loss came from Bengaluru FC. I think the first day, if you remember, and that was something unfortunate. Maybe they were just settling down, but once they have settled already, and this is something even Dugal was pointing out, right? We did have a chat with him. He said, yeah, FC Goa is looking really strong, but if there's any team that can behead them, then that is going to be Northeast United FC or Bengaluru FC. We saw that happened yesterday. Bengaluru FC could not do that. So Northeast United FC still have a chance. They're going to try and prove their mettle against them. But for now, if you have to make any predictions, GT, about the scoreline of the co-op matchup, what would it be? आई थिंक देखिए, जिस तरीके से अभी पिछला गेम सबसे मेरा प्रेडिक्शन 3-1 और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एक दो गोल्स के साथ मुझे लग नहीं रहा कि वो संतुष्ट रहने वाले, और मेनली चेन्नई एनएफसी का जो डिफेंस है वो अगर सही से काम कर गया देन इट विल बी ओके, एंड मे बी शायद इधर चेन्नई एनएफसी एक अच्छा ड्रॉ निकाल दे, और एल्स मुझे लगता है कि 3-1 होने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। बट उसी के बीच में हो चुका है शुरू ये गेम, राइट टू लेफ्ट इधर अटैक करते हुए दिखेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, एंड लेफ्ट टू राइट इधर चेन्नई एनएफसी हम लोगों को दिखेंगे खेलते हुए। वर्जिल वैन डाइक, अल्टीनी, सब अपने पास बॉल कंट्रोल काफ़ी बेहतर तरीके से रखते हुए, और देखिए बॉल कंट्रोल रखना ही होगा, इधर कोई और सेकंड चांस नहीं है, क्योंकि एक बार अगर नॉर्थ ईस्ट के पास बॉल चला जाए वो इजीली बॉल छोड़ते भी नहीं और खोते भी नहीं। Almost Chennai FC looking really strong, and that was Tikka. He's one of those players that kind of refuses to make that extra pass. What he does instead is just tries to get through the defense, dribble his way through, or just with his sheer strength, just pushes his way through. And he kind of succeeds. And now Northeast United FC is just trying to control the tempo a little bit. Chennai FC have been off to a really good start, have been looking really attacking. And, this is a must-win game for them. Especially, like we said, you would want to solidify your spot in that top 6. And this victory would help them in doing so. As Imad, you got to stop. You got to stop doing that. I mean, nobody saw that coming. I mean, how? The sheer cojones, the confidence on this lad to go for a shot like that. I mean, had he sort of, green timed it, I could have seen this going through. Little bit of a curl there, little bit towards the top left. This could have been a goal. But regardless, 90 marks for a good attempt. They still have a corner out of this. For sure. ये सब चीजें इमाद ही कर सकते हैं, इमाद, और उनके हाथ पे जब मेसी रहेंगे फिर तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और उसी जगह पे एक कॉर्नर मिलता हुआ, थोड़ा टाइम जरूर ले रहे हैं, शॉर्ट कॉर्नर किया जाए तो यूजुअली होता है ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए एम्बापे, बट फाइनली हकीमी, लेकिन एक गलती हुआ है, रोनाल्डिनियो के पास बॉल ट्रवेल की कोशिश किया गया था बट डिफ्लेक्ट हुआ, ऑफसाइड। ये ऑफसाइड है, थैंक गॉड। Had it been a penalty, then things would have been otherwise. But you could see, right? Northeast United FC, they're showing intent. They're showing intent to kind of try and go on and challenge for the ball. And Chennai FC could decide to play a little bit longer right now. And with Jairzinho passes on towards Zinedine Zidane. Nice pass breaking through. Gets on Hakimi, but still looking for an area to get through into the final third. But does not happen as quickly Northeast United FC are breaking for a counter-attack. And Hakimi coming for the rescue as Dudulit ensures that they now could counter the counter. But, well, it does not happen. So ball's going back and forth. And both these teams, yet we are sort of waiting for that opening goal. And this time, it's not going to be that easy. Northeast United FC understand that because Tikka Town, he was also the finalist of last season's eISL. So you would expect bigger things from him. And for Northeast United FC, they would be hoping that they kind of seal the deal in this particular matchup only. Because if somehow this goes south, then you never know.
Tikka is one of those players who can turn the tides any single moment. And now through that left wing with Theo Hernandez, pass it on towards Ronaldinho, and looking for that cutback, goes back for Ruud Gullit and wanted to charge in through. This time was well read by Chennaiyin FC. चेन्नई एफसी फाइनली डिफेंसिवली काफ़ी बेहतर एक स्ट्रक्चर कहने की मेंटेन करके रखे हैं अभी के लिए, लेकिन बात फिर वो आ जाता है कि इमाद खेल रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, उनको स्ट्रक्चर तोड़ने की भी जरूरत नहीं, ऊपर से निकाल देते हैं बॉल, तो बहुत टफ हो जाता है उस टाइम पे। बट देखिए इस बार एक गलत पास, ये थोड़ा बहुत हिट कर सकता है बाद में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, क्योंकि अगर बार बार गलती होता रहे एंड चेन्नई एफसी एक ना एक बार डिफेंस को तोड़ने में ज़रूर कामयाब होंगे एंड उसके बाद शायद बैक ऑफ द नेट बॉल देखने के लिए मिल सकता है। बट अभी के लिए देखिए शुरुआती 30 मिनट काफ़ी ज़्यादा इवन रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी के पास ज़्यादा कंट्रोल है और एंड ऑल। दोनों ही क्लब्स प्रॉपरली कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना पोजीशन मेंटेन करे, एक अच्छा बिल्डअप दिखाए, और दोनों ही क्लब्स सिमिलर तरीके के जो गलतियां हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार मौका बन चुका है। शॉट एंड व्हाट अ गोल! ये रोनाल्डो ट्रॉफी टाइटन कार्ड 97 रेटिंग, ये कुछ भी कर सकते, पैर के नीचे से बॉल निकाल दिया। Oh God, this is miserable right now. Virgil van Dijk, the best defender in the game, getting beaten like that right through his legs. The ball was short and went for a goal. In fact, Van der Sar was helpless. You can't do anything to stop a goal like that. You know, I still can't understand why I had to be given a 97 card. And this is the second time he's been doing that. You know, just a turn and takes a shot. Does not matter which leg you are on. It's a goal if it's R9 on you. And at this point, quite justifying that humongous price that he carries along with him, right? One of the most expensive cards in the game. But for now, with Lionel Messi, goes for a step over. Oh, dribbles past. And with R9, if Ronaldinho gets it, oh, tried to just drive that shot through, but sadly could not escape the long reaches of Van der Sar and out for a corner. एक और मौका, ज़िडान से बॉल छीना गया है एम्बापे की तरफ से। एम्बापे, व्हाट अ पास, व्हाट अ फिनिश! इमाद एंड सरांश खेलते हुए चेन्नई एफसी के डिफेंस के साथ, और कुछ देर पहले तक लग रहा था कि बहुत कुछ सिमिलर चल रहा है, दोनों ही इवनली खेल रहे हैं। फिर आया वो 5 मिनट का टाइम स्पैन जिधर 35 to 40 मिनट्स के अंदर 2 गोल स्कोर कर दिए गए। वाओ, क्या शानदार परफॉर्मेंस है! ऑब्वियसली था क्या है, अभी चल रहा है, ये चलता जाएगा। शायद एक और गोल कम से कम हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन चेन्नई एफसी को अपने डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो सबसे पहले मेंटेन कर रहे थे, वो स्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गोल्स आए हैं वो ऐसा नहीं है कि एकदम अलग तरीके से आए हो। हाँ, या पिछला गोल जो था वैन डाइक के एकदम दोनों पैर के बीच में से बॉल निकलना, वो था, वो कुछ नहीं होता जिसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये जो गोल आया, ये हम लोगों को सिमिलर एक ट्रेडिशनल वे कह सकते हैं गोल मारने का, तो वो थोड़ा जो है वो एंटिसिपेट करना चाहिए पहले से। Oh, now this is promising. This is where Chennaiyin FC will have to get back into the game. But North East United FC have recovered already. Just when we saw that maybe they had been opened up, no, that was not the case. A little bit of a halt there, and that is all it took for North East United FC to get their defense back in order. And as a result of which, North East United FC 2-0 up already after the end of the first half, and things aren't looking good for Chennaiyin FC over here. They will have to score 3 goals. They will have to somehow get that win in this matchup, so that they will be in a position to compete for those 3 points, because or draw over here
ensures Northeast United FC are going to continue, their unbeaten streak in just barring that first game. They've been winning all their matches, and that is going to just boost their morale, beating the defending champions. And it's an emotional moment for Saransh Jain to play against Chennaiyin FC, a club that he had represented in the previous season. Now playing against it, and I think Northeast United FC would just want to seal things over here, not really take it to the final game, because like we've already said, Tikka, this guy means business. एक और हो सकता था वैसे, जिस तरीके से उधर टर्न किया जा रहा था विद एम्बापे, हो सकता था। ओके, बॉल कंट्रोल उनके पास, बट लूशियो फाइनली इधर सेव करने के लिए आएंगे। बेलिंगम टुवर्ड्स मेसी ऑलरेडी रन निकाल के, यस एक और पास, आगे एक गोल होता हुआ दिखेगा, बट माल्डिनी उस टाइम पे मौजूद है और थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज चले गए थे, जिधर से और कुछ मौका था भी नहीं निकलने का। तो बॉल छीना गया, लेकिन अभी गोल्स की ज़रूरत है। सिर्फ बॉल छीन के पोजीशन रख के नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई एफसी, उनको अगर अपने ऊपर से प्रेशर हटाना है तो कम से कम इस गेम को ड्रॉ करना ही है, अगर थोड़ा भी होप्स भी बना के रखना है नेक्स्ट गेम पे जीत के ड्रॉ करने की। इधर इस गेम को जीतना तो बहुत टफ है। उसी के बीच में देखिए बॉल कंट्रोल लाजवाब। ओ, इधर कोशिश था कि वो इधर शॉट ले वॉली पे, बट नहीं लेने दिया गया। मार्टिन इधर पुश करते हुए दिखे बॉल के ऊपर, और जो ये पासेस कहने की बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है, क्योंकि आप एकदम राइट हैंड साइड पे ही ऐसे थ्रू पास नहीं देना चाहोगे। मे भी हो सकता है कि वो एक मिसप्रेस हो गया हो, बट एक गलती। फिक्सर्स, क्या लगता है, क्या एक गोल हो पाएगा चेन्नई एफसी की तरफ से? I mean, there have just been a few handful, I think 1 or 2 chances where Chennai FC have at least made it to the box, right? And nothing has come through it. Such has been Northeast United FC's defense, absolutely airtight, not letting them have a go at it. And this is the point where they're starting to frustrate Chennai FC into making even more errors. That constant tiki-taka passing that you can see. I'm pretty sure you just posted a similar Instagram reel tonight, in fact today, where CR7 was quite frustrated with what Barcelona were doing. Something similar is happening to Chennai FC at this point. Look at that, challenging, making it look so easy, these stuffs, and Imad in the midst of it all kind of tends to go for some shenanigans. And well, let's see what can they create out of this chance. Have been really slow with their build-up, are taking their time, getting all the players up. You could see the attacking line present for the Northeast United over there. Passed on towards Messi. Now this is a good chance for Ronaldinho, and he will not miss it as he scores. And there you go, the third goal also coming in. And this might be it. This might be lights out for Chennai FC. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मैं जस्ट इधर देख रहा था लाइक टाइमर के ऊपर कि कब तक वो बॉल अपने पास ही रखते हैं। आई थिंक इट्स बिन 12 to 13 मिनट्स इन गेम टाइमर के हिसाब से। उन्होंने बॉल लूज ही नहीं किया, अपने पास रखे। बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट पासेस देखने के लिए मिला, और बीच में एक रन रोनाल्डिनियो की तरफ से, एंड देन उनको पास एंड उन्होंने फिनिश कर दिया। क्या उनके लिए गेम इतना इजी है? वी डोंट नो, लेकिन देख के लग रहा है इतना लाजवाब गेम प्ले, इतना शानदार कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में जो सिनर्जी है वो जिस तरीके से बना है। क्योंकि जब आप टिकी टाका करते हो, जब आपको क्लोजली पासेस खेलने पड़ते हैं, और वो भी सेम पेस के ऊपर बार 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 बार, उस टाइम पे आपका सिनर्जी और कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर होना चाहिए, और वो दोनों का ही एक जगह पे जाके यानी कि इक्वली देखने के लिए मिले। और उसके बाद ये पास, ये शॉट, वैंडेसार नहीं पकड़ सकते ऐसे गोल्स। और
एकदम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। बहुत लेट हो गया चेन्नई एफसी के लिए। अभी जो भी सब्स्टिट्यूट वो कर ले, शायद एक गोल आ जाएगा, बट कम बैक इट्स टू टफ। I mean, the comeback at this point, you're not in a position where you could look for consolation goals, right? Because if they lose this one, then Tikka is going to be fighting a lost battle. And that is not a situation Chennai FC like to be playing in, because they've been in these phases a lot of times, but this time it looks a lot more promising with Root Hullet. Oh, no way that could be saved. How, TT, tell me, how are you going to beat a defense like this? They don't even let it come to the keeper also. The defenders are suffice enough to make those crucial saves, and this is where, again, they're looking to break free, but did not have enough men on the attack. But still, relentless, keeping possession, a step over, trying to get that little pace going. Oh, nice pass on towards Mbappe. Nice save, comes in from Maldini there, because had he not made that, I think that fourth goal could have been incoming for Northeast United FC. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ऑलरेडी 3 गोल्स इधर स्कोर कर चुके हैं, सो इसके बाद नॉर्थ ईस्ट को कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वैसे तो हालांकि वो पिछले पूरे 70 मिनट पे भी नहीं था, वो जस्ट अपने पेस पे खेले, अपने ट्यून्स पे आगे गए, फिर ट्यून्स को एंजॉय किए और उसी फ्लो में 3 गोल दाग के चले गए। बट चेन्नई एफसी, उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो जाके एटलीस्ट इधर डिफेंस को भेदे। एक बार 2 बार हुआ, लेकिन उस जगह पे भी एट द एंड ऑफ द डे इधर या तो वैन डे सार का ब्रिलियंस या फिर वैन डाइक का पोजीशनिंग, ये दोनों बहुत बार जो है वो प्रॉब्लम में डाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। बट फाइनली वैन डाइक बॉल छीनेंगे, बट ये पास मुझे समझ में नहीं आया इधर स्पेशली, और ये गलतियां बार बार हो रहा है। जिधर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप गलतियां करो, उधर आप गलतियां कर रहे हो। लेकिन इस बार जो गलती हुआ फाइनली वैन डाइक, लाजवाब सेव वैन डाइक के तरफ से। Yeah, thankfully saved, rescued, and at this point, at least scoring a goal could sort of help them in making sure that it's not a little bit of a reassurance to the fans that they're not out of things yet. I mean, don't get me wrong, Chennai FC still might have made it to the playoffs, but a respectable scoreline would kind of keep their morals up, right? You can't afford to lose like that, because Chennai FC is one of those teams who would like to defend their title and haven't been playing like this, have been outplayed on numerous occasions by the other clubs, and this is something that they would want to end as a frustrated chance, going in for that power shot there, but still missing the post, and there you go, full-time whistle gets blown, and Northeast United FC secure their 3 points and inch in that gap against FC Goa. Still one more game remaining, but that's going to be for mere consolation, an exhibition match, and this time also TT, they have been outplayed by Northeast United FC. Chennaiyin FC left absolutely stunned and astray with their approach, whereas Northeast United FC so stout, knowing what to do, and how do you remedy the hemorrhage from here? Chennaiyin FC must be wondering, because things haven't been going well for them. But let's hope there's a better tomorrow. क्या देखिए, इधर जितने भी गोल्स आए हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, वो पूरा हम लोगों को देखने के लिए मिला है उनके लाजवाब कोऑर्डिनेशन की वजह से। एंड वो कोऑर्डिनेशन हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से इधर 3 गोल्स तो दागे, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 गोल्स हो जाएंगे कम से कम,
बट मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि चेन्नई ने से एटलीस्ट 1 गोल स्कोर करेंगे, लेकिन वो भी करने नहीं दिया गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से। सो उनका जो डिफेंस है वो डे बाय डे और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। देखिए हाँ, जैसे कि आपने कहा था कि ये एक हारा हुआ बैटल लाने के लिए आएंगे अभी कमन टिक्का, और ऑपोजिट पे सारांश रहने वाले हैं, तो कमन टिक्का के लिए भी ईजी नहीं होगा। हो सकता है कि प्रेशर नहीं, हम लोग जानते हैं कि आखिरी गेम पे जब आप हार चुके रहते हो तो आपके ऊपर जीतने के प्रेशर नहीं रहते, लेकिन इस बार अगर प्रेशर नहीं भी रहे फिर भी मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा, क्योंकि ऑपोजिट पे सारांश है। मतलब आप किसको छोड़ के किसको देखोगे इस टीम के अंदर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पे? इमाद अलग लेवल पे चल रहे हैं, सारांश तो ऑब्वियसली पहले से ही अच्छे खेलते हैं और उनका फॉर्म तो कभी गिरता ही नहीं है, काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं। मैं तो बहुत साल हो गए, मैंने सारांश को एटलीस्ट जो है उनके फॉर्म डाउन होते हुए तो नहीं देखा। Yeah, I mean, one of those players who made it to the Nations Cups, and he's been representing the country not just for the first time. He's done it more than 10, and he's that good of a player. One of the best in the South Asian region, and Karman Tikka, he's in for a role. And right now, this final game, but quick look at the scoreboard, and it's pretty much set in stone, right? No wonder whatever the outcome of this particular game is going to be, it's still Northeast United FC. They will have that 3 points secured, cemented for them, and it's now just to walk out with their heads held high for Chennaiyin FC. At least there's a little bit of an ascertaining their fans that, hey guys, we still got what it takes to be the champion. We can still do it, and believe in us. I think that can only happen if Karman Tikka takes down Saransh. I think that is the narrative, that is the goal, and that is what is going on in Tikka's head, because it was quite different this time from Northeast United FC. Their change up in orders, because we've seen usually Saransh comes in for the first game, and then Emad is just playing the third one, where we've seen on multiple occasions where maybe Saransh has ended with a draw, maybe a surprising loss, and he picks up on those pieces and he makes sure things are quite a-okay. But now, since they've changed their starting orders, now this is looking even better. Emaad gets the job done. They go on and win the co-op, 3 points sealed. No pressure, no tension for Saransh. He can just play his natural game. And this is one of those moments where he could go into a Shagnik mode, where he could try and try different possibilities, just try dribbling past Karman Tikka, because these two players have a quite contrasting style of gameplay, right? Where Karman Tikka believes a lot in dribbling the ball past the defenders, whereas Saransh is more of that guy who's got the good fundamentals right. What he does is keeps the passing game on constantly, those quick flurry of passes, and thwarts you into thinking who is he gonna try and beat. Because by the time you press your L1s, by the time you get your player switches right, he's already scored a goal. So two different style of players, two amazing players. Now they're gonna go clashing against each other. A battle between two titans of eISL season 2. It's gonna be fun to watch, nonetheless. बिल्कुल, एंड इससे तो कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि आखिरी गेम तो एंटरटेनिंग होने ही वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि कमन टिक्का कहीं ना कहीं शायद एक बार के लिए इस मैच को ड्रॉ या फिर जीत भी सकते हैं, क्योंकि कमन टिक्का कहीं ना कहीं जिस तरीके के प्लेयर हैं वो भी बहुत कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स लेके आते हैं, तो उनकी तरफ से भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ऑन द अदर हैंड सारांश की अगर बात किया जाए, सारांश को रोक पाना बहुत टफ है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल गेम के ऊपर ही इतना सारा स्ट्रांग है कि वो बीच में अगर छोटा सा भी गैप देखे उधर से वो पास निकाल सकते हैं। वो भी कितने पेस पे कितने पावर पे मारने से वो बॉल निकलेगा वो भी उनको पता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मेंटेन करते हैं सारांश। तो गेम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। हालांकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड नहीं वो और मैटर नहीं करता, लेकिन ये गेम एंटरटेनमेंट से पूरा भरा हुआ रहेगा। बात कर ही रहे थे, उसी के साथ हो चुका है शुरू, विसल इधर बज चुका है और बॉल भी रोल होना शुरू हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे इधर खेलते हुए दिखेंगे चेन्नई एनएफसी, राइट टू लेफ्ट इधर खेलते हुए दिखेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। सो सारांश एंड कमन टिक्का, ये फाइनल बैटल है जिसपे देखते हैं क्या कमन टिक्का जाते जाते कुछ बेहतरीन कर पाते हैं कि नहीं।
पूछ रहे थे, कर चुके हैं 4 मिनट के ऊपर। बस 4 मिनट हुआ है गेम चालू हुए और पहला गोल आ चुका है कमेंटिका की तरफ से। And Saransh is like, what? Did he just score a goal? And this is exactly why Northeast United FC had to seal things in those two games, right? Because had it come down to the third, I'm telling you, anything and everything could have happened. Because Karman Tikka is one of those players. He kind of maintains that calm, steely demeanor, and then he starts scoring. There is a killer inside him who just unleashes once he gets on the field and starts scoring goals. But this is where Saransh has got to wake up. You know, he's also got a beast within himself, and you better not poke the bear because he's a weekend. You know, he can unleash that. I still remember, you know, back in the days, 2020, 21, in a different tournament, he used to score like what, 14 goals, 13 goals, and he used to make the competition uh, look more like a comedy show. Saranjan is a player of that caliber. But with passing time, we have seen a lot of players have come up, a lot of rising stars. Everybody maybe would have been new to the scene, while Saranj was a veteran, and now it's looking really tough. But at the same time, when you look at the bigger picture, it's such a nice thing. But there you go, Saranjan on a breakthrough, as with R9 Oh, does not miss on poaching that header. As we speak, there you go. There you go. He's made a comeback. You cannot give him a room and a space like that because if he gets it, he's out to score. yes, and finally with that 1-1 हो चुका है, इक्वलाइजर भी दाग चुके हैं। पहला गोल आया 3 मिनट समथिंग के ऊपर, उसके बाद जो दूसरा गोल है उसके जस्ट 10 मिनट बाद आया। शायद ये तीसरा हो सकता है, लेकिन थियो हर्नांडेज फाइनली एक इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला उनकी तरफ से। कमेंटिका कोशिश उनका भरपूर रह रहा है, लेकिन इस बार अटैक पे जा रहे हैं सरांश सरांश का जो कॉम्बिनेशन प्ले है वो काफी स्ट्रांग है, बट एक गलती, बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे ये बॉल उनके पास से निकला है। काउंटर पे बहुत तेजी से ट्रांजिशन कर चुके हैं ऑलरेडी। कमेंटिका लेफ्ट हैंड साइड से ऑलरेडी रन निकलता हुआ कैप्टेविया, लेकिन एम्बापे हील टू हील कोशिश था वो गैप निकालने की, लेकिन माल्डिनी के साथ बेहतरीन कंट्रोल शो करते हुए सरांश एंड उसी के साथ एक डिफेंस भी हुआ और फिर से एक बार बिल्डअप पे जा रही है सरांश। Yeah. And he had a lot of options. Went for Ronaldinho as Theo Hernandez breaks through, goes for a ball roll to cut back onto Ronaldinho. But, things happened so quickly, it was difficult to maintain that ball control over there. As a result of which, it's 21 minutes into the game, folks, and we are one each apiece. Both these clubs over here, quite important. I mean, for Northeast United FC, I think Saransh, like we said, would be playing for that individual glory over here. Would want to get a win against Tikka. Not a lot of players have done that so far in the eISL, and Saransh also would want to have his name registered as one of those who slays down Tikka. But you never know, when you're in Tikka town, you're bound for some thrilling action and drama, because now Saransh, he's broken free. He's not got enough men to assist him, to aid him, but still trying to buy enough time. Oh, the little pass I think was intended maybe for Messi, but no. NEUFC लेफ्ट हैंड साइड से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश था बाय द वे, बट हो नहीं पाया। विद मेसी इमाद काफ़ी बेहतरीन खेलते हैं, वो बहुत ज़्यादा शानदार कंट्रोल दिखाते हैं, सिर्फ आज के गेम में नहीं, इसके पहले भी हम लोग थ्रू आउट द सीजन देख पाए। बट एज ऑफ नाउ सरांश टू रोनाल्डो, ओह एक बैक हिल करके देने की कोशिश था एम्बापे को। अगर ये गोल होता तो ये एक लाजवाब मास्टरपीस हो सकता था। All right. So, yeah, I think Saranjan, you could see, right? He's been relying heavily on those counters. We haven't seen that passing game, which he usually does, right? That passing routine. He kind of sets it up for his players. This time with Ruud Gullit, passes it on towards Mbappe, and
and quite an awkward shot. The moment it left his feet, we knew that that was not going to be a goal. It kind of lacked that power if the curl was even right. But a Trivela cross coming in towards Capdevia. And now, Chennaiyin FC looking to find chinks in the armor. Again, a long pass being made, and this could be promising with Eusebio. Takes such a powerful shot, but Van der Sar getting a very crucial save, and that's when we were thinking could have gone for a pass shot. Was well defended as we are almost on the cusp of the halftime. The scoreline still level. Now Saransh. बॉल कंट्रोल तो है बट रोनाल्डिनियो बीच से ही उधर सेंट्रल एरिया पे जाने की कोशिश था जो कि हो नहीं पाया, बट इस बार के लिए राइट हैंड साइड से बहुत शानदार एक रन निकालते हुए विथ रोनाल्डिनियो। टिक्का का बॉल पोजीशनिंग धीरे धीरे करके जितना सेकंड हाफ लाइक पहले हाफ के विसल के क्लोज आ रहे हैं, अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिला था टिक्का की तरफ से, क्योंकि वो अभी जस्ट जीतना चाहते हैं, वो बाय ऑल आउट जाना चाहते हैं इधर, क्योंकि देखिए उनके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो वो ऑल आउट जाएंगे ही। दोनों में से दोनों शॉट ऑन टारगेट थे टिक्का की तरफ से। ऑन द अदर हैंड हम लोग को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से 3 शॉट्स देखने के लिए मिले थे ऑन टारगेट, बट यूसुबियो के साथ जो वो शॉट था, आई थिंक एनी अदर डे वो गोल हो सकता था, बट वैन डे सार आज जो है इस गेम के ऊपर पर्टिकुलरली काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने के लिए मिला। Yeah, it's been a past couple of weeks that we've seen Van der Sar has been quite flawless, right? Usually these players are so agitated with their keepers, but look at Saransh go. I thought he'd go for a ball roll and a pass, but no, that did not happen. That did not happen, as a result of which, well, Saransh still keeping possession. Lionel Messi to Bellingham. Passed it on towards R9. But Tikka Town's defense has been quite formidable. Nonetheless, hasn't been giving away a lot of chances, and the Casters curse prevails. A beautiful through pass, and that goal is going to be there. The ball just rocketing past the keeper. There was no chance on earth Tikka could have saved that. The moment the through was given, you could see how split open his defense was, and just like that, Saransh gets a lead, but could be a sucker punch, but no, does not let it happen. एक बार के लिए टिक्का समझ भी चुके थे कि राइट टॉप कॉर्नर पे शॉट आने वाला है, तो उसी वजह से उन्होंने गोलकीपर को भी थोड़ा मूव कराया था, पर उसके बावजूद इतना पावर था शॉट पे, कुछ कर ही नहीं पाए थे वैन डे सार। रिया एक बार फिर से अटैक पे जा रहे थे, बट एक गलत पास जिसकी वजह से बॉल जाएगा। एंड विद कैप्डेविया हम लोग के अंदर लाइक बहुत बार ये बातचीत हुआ है कि कैप्डेविया क्यों थियो हर्नांडेस की जगह पे, क्योंकि थियो हर्नांडेस का जो रेटिंग है वो ज़्यादा है। मैंने जस्ट 86 रेटिंग कैप्डेविया खरीदा था सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आई थिंक 13,000 कॉइन्स, और वो कैप्डेविया मेरे 90 रेटिंग कार्ड से भी बेहतर था। I mean, the first foot hero are you talking about? Yes, 86 रेटिंग कैप्डेविया लेफ्ट बैक, और वो 90 रेटिंग लेफ्ट बैक से भी बेटर परफॉर्म कर रहा था। एआई बहुत स्ट्रांग है कैप्डेविया का, तो आई थिंक नो डाउट क्यों हम लोगों को देखने के लिए मिलते इतना ज्यादा कैप्डेविया। Yeah, I think even with the recent cards also coming out, it's just gotten even better and quite balanced. Even I was having this conversation with Lokman, why Capdevia? One, though you get that extra little chem, and because a lot of these players kind of tend to use the Premier League players, and then you also have that more. He's kind of a more balanced fullback. That's what Lokman had to say, and as a result, we've seen a lot of players use that. But right now, Tikka, this could have been a good chance. It was a player lock. Did also make the pass right, but oh god. A beautiful driven through pass, but Van der Sar just comes in through, heads the ball away. And now Tikka getting back on a counter-attack, has triggered the run for his right back also. Oh. All right. Tikka is in the mood for some magic.
his flickering his wand. But this time, however, Saransh successfully evading his attack. Now for the second time, corner being taken, but this time dealt with pretty well. Yeah. बहुत बहुत ज़्यादा शानदार कहने की मोमेंट्स अभी तक देखने के लिए मिला है और ये 70 मिनट कब बीत गया वो पता ही नहीं चला। इतना बेहतरीन गेम चल रहा है, उसी के बीच में एक शानदार मौका, लेकिन फिर एक पास के लिए गए। वैसे रोनाल्डो को हम लोग देखें ये सब एरिया से भी वो दाग चुके हैं, तो मुझे लगा था मे भी एक डायरेक्ट शॉट लिया जा सकता है, बट अभी ज़िनेडिन ज़िडान टू रोडोलीत, टिक्का, यूसेबियो, रोनाल्डिनियो, बहुत शानदार बॉल कंट्रोल, लेकिन जस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा हल्का कुछ मिली सेकंड्स के लिए ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बॉल आउट ऑफ कंट्रोल गया एंड उधर रोडोलीत और इंटरसेप्शन, लेकिन फिर भी बॉल कंट्रोल नहीं करने के चलते बॉल जा चुका है। फिर से सरांश के पास इस बार गोल हो सकता है, लेकिन सेम विद सरांश एज वेल, उनका भी बॉल कंट्रोल जो है वो हो नहीं पाया इधर, जिसकी वजह से 2-1 का ही रहेगा स्कोर लाइन। At this point, we haven't seen a lot of substitutes being pulled over, right? And throughout the day today, it's kind of got me thinking. I mean, the first game, there was nothing really for Navin to work out on, right? There's no chance that he could have made a comeback. But now, Tikka wanting to just to dribble past Saransh Jain's defense. This has been a much tighter one. And had, I think, maybe had Saransh, in fact, had Tikka played the first game against Emaad and had won that, then there would have been a chance at least for Chennaiyin FC to be playing in the third game, something to win for. But Tikka still looking for a draw, still looking for that equalizer. But no, Saransh has no intent to let him pass. सरांश के अभी तक जितने भी गेम्स हैं वो हाई स्कोरिंग ज़्यादा गया नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। क्लोज अगर नहीं भी होता है फिर भी जो गोल्स है वो हम लोगों को 2-3 के आसपास ही देखने के लिए मिलता है, 1 से 3 के बीच में। लेकिन उनके गेम पे एक फ्लॉलेसनेस है जो कि शायद बाकी बहुत कम ही प्लेयर्स है जो कि मेंटेन कर पाते हैं। एकदम स्मूथली आगे बढ़ते हुए, इधर उनका डिफेंस काफी स्ट्रांग है, एक और बार अटैक पे जा रहे थे बट वर्जिल वैन डाइक अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को काम में लगा दिए डिफेंड करने में, और इधर एक इस बार सरांश की तरफ से वो टैकल था। ओह नो, बॉल कंट्रोल नहीं हो पाया और टाइम भी हो चुका है खत्म। सो 2-1 के साथ इधर व्हाइट वॉश किया जाएगा चेन्नई एफसी को। 3-0 ओवरऑल मैचअप के अंदर देखने के लिए मिला। तीनों के तीनों गेम्स इधर जीते नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जिनको हम जानते हैं, जो अपना परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं और ऐसे दिखाते आ रहे हैं कि बाकी के क्लब्स अभी डर रहे हैं। और ये चीज़ सही है कि एफसी गोवा को अगर कोई रोक सकता है तो यस, यही वो क्लब है जो रोक सकते हैं। Yeah, I think well, they're on the right path. That is something that we can say for sure. And this game, you know, kind of trying to sum it up, it was that first early goal that we got to see from Tikka. That was just about it. And the remainder of the game, it was Saransh taking control. At this time, I think we saw a different style of FIFA from the side. Not really that passing FIFA that we've come to see more out of Saransh, but he's been quite crafty playing those long balls also, and you know, even Tikka tried to create chances like that, and this goal saved. Oh god, I mean, I was kind of just taken aback because that shot lacked had the power that was needed, and then Saransh just shows him how it's supposed to be done, just beats the keeper there. But Tikka, you know, kudos for the efforts that he managed to at least pose a challenge to Saransh, and they were going head to head.
You can't say that no, Tikka was absolutely getting outplayed. It was not the glimpses of the first game that we had when Imada took on Navin, right? Tikka was, exchanging blows after blows. It was just that Saransh was one step ahead, had a lot of control over the ball, and to be honest, we kind of had said it loud, right? There was nothing for Chennai FC to salvage out of this game, apart from just the glory, just reassuring their fans. So, with that being said, Northeast United FC have gotten 3 extra points. That means they will be kind of inching in a little close towards FC Goa. They're going to be getting at maybe 18 points from over here, with one less game played also. So that's also there. Let's take a look at the scoreboard and see for one last time how things panned out. So it began with Navin and Emaadrox. It was a 6-1 scoreline, an absolute, a cracker of a performance by Emaadrox, and then they kind of sealed it off in that second game in the Coop matchup where they defeated Chennaiyin FC 3-0. And then towards the end, like TT said, it was a whitewash for Northeast United FC, and it was a 2-1 scoreline. So Chennaiyin FC, one defeat over here, still in a comfortable position, TT. Not like that. There's something to worry about. Everything's gone wrong for them. Still have 2 more games to play. If they go on to win their next 2 matches, then we're gonna see more of them in the playoffs. या बट आई थिंक इधर बहुत कुछ देखना होगा चेन्नई एफसी को इधर इस पूरे एंटायर सिनेरियो के ऊपर, बट उसके बीच में एक एमवीपी देख लेते हैं कि कौन है. ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है, वो होने वाले हैं इमाद. 6 गोल स्कोर किए थे उन्होंने आते ही, और जो झटका इधर नवीन को दिया गया था उसके बाद कोऑप पे उसका हम लोगों को जस्ट आफ्टर शॉक देखने के लिए मिला, जिसपे 3 गोल फिर से आते हुए देखने के लिए मिले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से. लाजवाब गेम दिखाए ये पूरा क्लब ने. जो कॉम्बिनेशन प्ले किया गया वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट था. बट या इधर देखिए, अगर हम लोग इधर बात करते हैं कहने के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो इधर गोल स्कोरिंग, गोल्स फॉरवर्ड कितने क्या हो रहा है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिपेंड बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है. और जिस तरीके से हैदराबाद एफसी के पास भी हालांकि इधर गेम्स बचे हुए हैं, जो गेम्स के साथ वो भी कम बैक कर सकते हैं. तो चेन्नई एफसी के लिए सिचुएशंस जो है वो मे बी आउट ऑफ कंट्रोल जा भी सकते हैं, क्योंकि गोल स्कोरिंग के मामले में एंड गोल कंसीड के मामले में कहने की थोड़ा पिछड़ते हुए दिखे हम लोगों को चेन्नई एफसी. तो ये सब कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा आएगा कैलकुलेशन के अंदर, जब धीरे धीरे हम लोग एंडिंग में जाएंगे, जो मेन पॉइंट्स टेबल निकल के आएगा, तब आप कितने गोल स्कोर कर रहे हो, कितने गोल आप कंसीड कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जाएगा अगर पॉइंट्स सेम हो जाते हैं तो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं अभी जिस तरीके से eISL सीजन 2 चल रहा है. Yeah, of course. I mean, now I must say that Chennai FC have a few relatively easier games to play, and they would want to win both of them. But yes, that's going to be in action for later. But right now, the action in the eISL Season 2 still carries on. We have 2 more games remaining. But right now, ladies and gentlemen, we'll be heading for a short little break, because coming right after is a huge match you wouldn't want to miss.